Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the K-map from the subject Discrete Structures and Theory of Logic. Right, so the topic of today's class will be the discussion on K-maps. Now first we will deal what is a K-map, the basic introduction of a K-map. Why we are using K-map, right? So a K-map, a Karnaugh map is a graphical method used to obtain the most simplified form of an expression in a standard form. मतलब ये एक K-map एक ग्राफिकल मेथड है जो बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. और एक boolean expression in a more simplified form is represented using K-map, right? So what exactly is the definition of K-map? When a boolean expression is represented in a more simplified form, either in SOP or in POS. SOP means sum of products और POS is product of sum. अगर कोई भी boolean expression हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड एज के मैप. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ के मैप. बाय सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन टू द वन दैट यूजेस द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स. प्लीज रिमेंबर, अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन को इतना सिंप्लीफाई करो दैट यूजेस द मिनिमम नंबर टर्म्स. वी ensure that the function will be implemented with a minimum number of gates, right? कोई boolean expression को इतना reduce कर दो, इतना minimize कर दो कि उसमें number of terms हमारी कम हो, जिससे कि उस function को हम minimum number of logic gates से represent कर सकें, right? ऐसे ही by simplifying an expression to the one that uses the least number of literals for each term, right? Least number of literals, which in turn will ensure that the function will be implemented with the gates that have the minimum number of inputs. So the key takeaway from this slide is that a K-map is what? What is a K-map? K-map is a graphical method which is used to represent a Boolean expression in the most simplified form. It is either SOP or POS. Let's move ahead. This is a basic introduction of K-map, keeping in mind the 2-variable K-map, 3-variable K-map and 4-variable K-map, right? So 2-variable K-map. If we talk about the 2-variable, that we are talking about the 4 conditions, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. If we talking about the 3 variables, we are talking about the 8 conditions. If we talk about the 4 variable, we are talking about the 16 possibilities, right? So a Boolean expression given here is represented in this form. This is a representation of a K-map or a graphical method is simplified into this Boolean expression, right? So what we will say is this is A have 2 possibilities 0, 1, B have 2 possibilities 0, 1. So what will happen? I will have 4 possibilities as 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So in case of, if we talk about SOP, that is, if we talk about this, then we will say that there are 4 possibilities 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि this is represented by 1 and all other values are represented by 0. Now what is the meaning of this is 1? This 1 means that A is also 1 and B is also 1. So we say that this expression is simply AB. So if we talk about this expression, what is this? This is A complement B complement. If we talk about this expression, what is this? This is A complement dot B complement. If we talk about this expression, that is A B complement, and if we talk about this, this is AB. So these are all the 4 variants of this as we go ahead in this, right? Hope you all have understood this, right? Similarly, if we talk about a 3-variable K-map, we have taken A as 0, 1 and BC as 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. Now why there is 1, 1? 1, 1 मतलब इसे हम ग्रे कोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ग्रे कोड्स मतलब
इंक्रीमेंटल ग्रोथ में हमें चेंज बाय 1 चाहिए। जैसे क्या होता, अगर मैं 0 1 के बाद यहाँ 1 0 रखता तो 0 वाली बिट मेरी 1 हो गई, 1 वाली बिट मेरी 0 हो गई, तो वो चेंज बाय 2 हो गया, राइट। तो चेंज मेरा इंक्रीमेंटल होना चाहिए बाय 1, दैट्स द रीजन यहाँ पे 1 1 है और 1 0 है। इसका रीजन इसलिए है कि अगर हम 1 1 को पहले ले रहे हैं तो हम इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ये है, इस एक्सप्रेशन को हमने क्या लिखा, ये वाली चीज मुझे क्या मिलेगी, ए कॉम्प्लीमेंट, 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी, right? This is all about these 4. So what we will say here we will directly say that A complement C is common and B plus B complement is written here, and here we will say that AC and B plus B complement. A B plus B complement we all know that is 1. So what we will get here is A complement C plus AC. And now if we talk about this, then we take C as common, we get A plus A complement and this is 1, so we get C as this. तो हम पेयर जो फॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो 2 की या 4 की या 8 की। हमें ये 4 की पेयर यहाँ पे मिल गई और इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड, ये मेरे पास एक्सप्रेशन था, इसको सिंप्लीफाई करते करते मुझे ये C में मिल गया। एग्रीड। अब जब ये मिल गया मेरे पास, अभी ये बचा है, तो मेरी 2 की पेयर ये भी फॉर्म हो सकती है। अब जब ये फॉर्म हो सकती है तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, this will be ABC and this will be ABC complement. So what will happen is AB common लिया, C plus C complement and this will be AB. तो AB यहाँ से आया, C वहाँ से आया, this is written as ABC, right? This is an example of 3 variable K-map. We will talk about 4 variable K-map. Now let's see the conditions of 4 variable. This is AB, this is CD. 0 0 0 1 1 1 and 1 0. You all got this. Why 1 1 in first in the form of a gray codes. 0 0 0 1 1 1 and 1 0. So these are some values 1 are given to us. Now we have to simplify this. So how we will simplify this? We will simplify it in this way that we either take this, right? We either take this or we take this or we take this. This may be a possibility, right? Or either we can take this 4 as well as this 4, right? If we take all these 4s together, तो we can simplify it in this way. तो इसको हम अगर देखें, सिंपली हमने क्या करा, इन 4 को एक साथ लिया, इन 4 को एक साथ ले लिया और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये मेरा ए बी सी, ये आ गया ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें, हमने ऑर्डरिंग कैसे कर रखी है वो एक बार नोटिस कर लेते हैं। नोटिस दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सेल इन द मैप आर सच दैट मूविंग फ्रॉम वन सेल टू एडजेसेंट सेल ओनली चेंजेस आर इन वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रे कोड्स, राइट। अब 2 वेरिएबल के मैप में हम यहां पे देख पा रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 0 and 1, राइट। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज दिस इज 0 1 2 and 3. How 0 1? 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो इसको हमने कैसे किया, हमने सिंपल यहां पे क्या पार्ट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे आ गया हमारा ए बी। तो ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखी बाय 1। ऐसे ही हमने यहां पे ये देखा 3 वेरिएबल के में, तो यहां पे 0 1 तो सही था, ये डबल 1 आया, तो क्या मतलब है, 0 1 0 से पहले ये 3 हो गया, ये 2, भाई 0 0 0 होता है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1, this is 0 1 2 and 3, so this is represented in this way. Similarly as 4 5 7 6, because what we are talking about, 1 1 is appearing before 1 0. Similarly in 4 variable K map, what we are saying is, this is what 3 7 is due to whatever the reason is, you all are aware of. This 11 comes up, so this is 12 13 14 and 15 15 14 and 9 8 9 11 and 10. So this is a 4 variable ordering of cells. Now how we will do a minimization or simplification of this? So implicant
a bubble covering, what is the meaning of implicant here? A bubble covering only once, size of bubble must be a power of 2. मतलब हम इसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, ओनली वंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वंस के बारे में कर रहे हैं, और साइज क्या होना चाहिए, 2 की पावर में, तो 2 हो, 4 हो, 8 हो, इस तरह की अगर पेयर्स बन रही हैं तो उनके बारे में हम, या तो पेयर हम 2 की बनाएंगे, या 4 की बनाएंगे, या 8 की बनाएंगे, या 16 की बनाएंगे. तो प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? A bubble that is expanded as big as possible but increases in size in a power of 2. जितना बड़ा बबल बन जाए उतना अच्छा है, लेकिन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? अ बबल दैट कंटेन्स अ वन कवर्ड ओनली बाय इटसेल्फ एंड नो अदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स बबल. मतलब क्या? एक बबल दैट कंटेन ए वन कवर्ड ओनली बाय इटसेल्फ, नो अदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर बबल्स, राइट? तो दिस इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. नॉन एसेंशियल, a one that can be bubbled by more than one prime implicants are called as bubbles. So what we are seeing here, these are two ones combined together, these are two ones combined together. We can take these two ones together or these two ones together, either of them. No need to take both, right? So what we are doing, this is one, this is one. Either we will take this. If we will take this, so if we will take this, then we will take this and this, or there was a possibility that if we will take this, so what we are taking, we are taking this and this again and again. So this is a basic representation, or the meaning of basic terms, what is implicant, what is prime implicant, what is essential prime implicant and non-essential prime implicant, and how we will form a pairs in this, right? So this is a variation or all the possibilities that is covered in a 3 variable. So let's see first example. This is function, this is represented as 0, 4. So what we will say that 0, 4 is B complement C complement, right? So how 0, 4 is represented here? So 0, 4 is represented here in this way, that this is 0, this is 1, this is 3 and this is 2, this is 4, this is 5, this is 7 and this is 6. So 0, 4 means the 1 are available at 0 and 4, rest are zeros. So what we will do here, this 1 will be written as A complement, B complement and C complement, and this is written as A, B complement, C complement. So what we will do, B complement C complement को हमने combine कर लिया, common लिया, ये आ गया A complement, and this is written as B complement C complement. So this is a simplified Boolean expression from a given SOP, right? Given function. For the given function, this is a simplified Boolean expression, 4 and 5, this is written as 1 and 1. So what we will do here is A, B complement C complement plus A, B complement C. So what we will do is A, B complement will be the direct answer, because C plus C complement will be 1. So what we will get, A, B complement. Similarly, this is 0, 1, 4, 5. The pair of 4 is formed. A pair of 4 is formed in which we can simplify it into the B dash. Let's see this as well. A complement, B complement, C complement, A complement, B complement, C, or A, B complement, C complement plus A, B complement, C. So what we will do here is A complement, B complement plus, here we will get A, B complement. What we will do here, B complement, A plus A complement, and this will simply be get as B complement. The answer is B complement. Similarly, 0, 1, 2, 3, this we will get, we will easily simplify this as A complement, right? So what we are getting is A complement. Why this is A complement? Because all the values are here as A, right? Now we will see another examples, 0 and 4. Function is represented as 0 and 4. So what is the meaning of this? 0 and 4 is not, this is 0 and 3, sorry. 0 and 3, so this can be represented as A complement C, that can be simplified as again. 4 and 6, this is 4, this is 6. So we can simply say that these pairs can be formed of single variable 2 की power 0. So this is single and that is we will simplify it to A C complement. 0 and 2, this is 0, this is 2, then single we can complement it to this. This is 0, 2, 4, 6, then 2 pair either, and we can further simplify it to C complement.
So these are some of the examples on 3-variable K-map. Now we will see some of the examples on the 4-variable K-map, right? So starting from this, all values we are aware of 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0, 4, 5, 6, 7. So what we know is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, right? 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. So what will happen is 4, 5, 6, 7. So what we will get 4, 5, 6, 7 is this. So we will simply say that this is what? This is A complement B. A complement B because 0 is for complement and we are talking about AB. So A complement B will be the answer for this. If we talk about this, these whole ones, then we will get as A complement B complement. If we talk about these ones, we are talking about AB. If we talk about this one, we are talking about AB complement, right? These all are the 4 variants of this. Now if we talk about this, this is CD. We simply see this is CD, all ones, right? So this is one of the variant of this. If we talk about this, let's suppose what is this? This is C complement D complement. And what is this? This is C complement and D. So what we will say is simply we can say this is C this is C and D complement. So what we will get is simply D complement, right? So if we talk about this, what is this? A complement B complement. If we talk about this, what is this? This is A B complement, right? So what we will get is directly we will get it as B complement as an answer. So these are some of the examples which we are discussing here. We can simply put on the values 0, 3, 5, 6, these all the values are given to us and we have seen this. There is no pair of 8, no pair of 4, no pair of 2, no pair of 1. These all are individuals. These all are individual. We can't form a pair of this. So we simply return as this, right? Similarly, we see here this and this. These all are independent pairs. Now, if we see this cannot be further be minimized, right? If we see this, what we are talking about is, if we talk in this manner, now what is this? C complement D. If we talk about this, what is CD? So what will happen? D will be the answer, na? So that will directly be computed here. So if we talk about this, this is what? This is A complement B. And this is what? AB. So what we will get? We will directly get B as this. So these are some of the examples of 4-variable K-map. Now procedure for finding SOP from a K-map, that is sum of product, right? So procedure: form the 2, 3, 4 variable K-map as an appropriate for the Boolean function. किसी भी एक Boolean function के लिए 2 variable, 3 variable, 4 variable K-map को form करें. Identify all essential prime implicants for 1 in a kernel of map. 1 की pairs को हमें identify करना है. Identify non-essential prime implicants once in the K-map, right? For each essential and one selected non-essential prime implicant from each set, determine the corresponding product term, right? And form a sum of product with all the product term from the previous step. So this is the basic algorithm we must be aware for a conversion of a from a K-map to a finding SOP, right? Now, if we given a Boolean function this ABC, this is written as 0, 1, 4, 5. So this is a Boolean function for this. If we directly talk about this, this is 0, 1, 4 and 5. We form a pair of 4. So what we will directly do is this. We were left with A complement B complement here, and here we are left with A complement B complement. So what we will do is we will left with B complement only. So this answer will be B complement, na? So 0 set is 2, 3, 6, 7 and 1 set is 0, 1, 4, 5, right? 0, 1, 4, 5. तो हमने 0 वाले सेट के बारे में बात करी. ये मेरा 0 वाला सेट हो गया, ये मेरा 1 वाला सेट हो गया. तो essential prime implicants are B dash, right? Essential prime, non-essential prime implicants, there are no non-essential prime implicants, hence F is equal to B dash. So this is a proper simplification of a given Boolean function. Another Boolean function is 0, 1, 4, 6, 7. 0, 1, 4, 6, 7. So what we have done is, this is 0, 1, 4, 7 and 6. This is 0, 1, 4. So what we are to do is, this is a pair of 2.
no issue with this. This is a pair of 2. And what will happen? We will form a pair of 2 as this and pair of 2 as this. So what we will do here, in doing this, 0 sets कौन कौन थे? 2, 3, 5 हो गए, right? And 1 set हो गए हमारे 0, 1, 4, 5, 6, 7, right? So what we will do is, this we will get as A complement, B complement. From this, what we will get is A C complement, और this is A B C, right? तो अब यहां पे हम क्या कर रहे होंगे? अगर इस चीज को देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर पा रहे हैं? आपने देखो यहां पे हमने क्या करा, इन दो को पिक किया, इन दो को पिक किया, तो एक तरह से ये A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट मेरा 2 बार आ रहा है। और किसके साथ आ रहा है? अगर यहां पे देखूं मैं, A कॉम्प्लीमेंट इन दोनों टर्म्स, ये कौन सी टर्म्स है? दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज A B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड C. So this is this. So from here what we will get is A complement, B complement, right? अब इस वाले पेयर से मुझे क्या मिलेगा? इस वाले पेयर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A complement, B complement, C complement प्लस A B complement, C complement. So what we will get is, this is A complement, B complement, next is B complement, C complement प्लस, अब मेरी लास्ट टर्म क्या बची? ये, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब क्या? ए बी. एग्रीड. अब जब ये ए बी बचा, तो अब फर्दर मुझे यहां पे क्या करना होगा? अब ये मेरे पास 3 टर्म्स बची हैं, इन्हें फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना है. तो मैंने देखा यहां पे असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी, राइट? एंड नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट सी, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज, सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? हम सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे एंड दिस इज माई आंसर. अब ये नॉन एसेंशियल वाला कहां से आया? नॉन एसेंशियल वो जिसको मुझे 2 बार ऐड करना पड़ गया. क्यों ऐड करना पड़ गया? क्योंकि मुझे पेयर 2 की नहीं मिल रही थी. पेयर 2 की कैसे नहीं मिल रही थी? जैसे यहां पे मैंने देखा, ये 2 की पेयर है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मुझे ए बी दे रहा है एसेंशियल में. लेकिन ये 2 की फॉर्म कर ली तो ये अकेला नहीं रखना ना, ये भी 2 की फॉर्म करनी है. तो इसमें मैंने इसको 2 बार यूज कर लिया. तो ये वाला जो रहा, ये मेरा नॉन एसेंशियल रहा, नॉन एसेंशियल रहा, इसलिए मेरा ये रिजल्टेंट यहां पे रिटर्न हुआ. एग्रीड. नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम अ के मैप. तो फर्स्ट इज प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द एसओपी फ्रॉम अ के मैप इज form the 2, 3, 4 variable K-map as an appropriate Boolean function. Similar algorithm for SOP as well as POS. Identify all essential prime implicant for zeros. Please remember one thing. If we talk about SOPs, we are dealing with ones in a K-map. If we talk about the POS, then we are dealing with zeros. So these are the zeros, non-essential prime implicant for zeros in a K-map. For each essential and one selected non-essential prime implicant for each set, determine the corresponding sum term and form a product of sum with all the sum terms at the previous one. Right? This is an example. So this is product of sum. This is a symbol of POS, and this is 2, 3, 5. Right? So what we will have? This is product of sum. The sums है उनका product. So we have seen the function in this form also. So what we are doing is A, B, C. So 2, 3, 5. So what we have done is, this is 3, this is 2, and this is 5. So we have initiated 0 to this, and rest 1 is this. 0 क्यों? क्योंकि हम POS के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने क्या करा? 0 सेट हमारे पास क्या है? ये. और 1 सेट हमारे पास हो गया ये. अब 0 की ये पेयर बन रही है और ये पेयर. तो सिंपल हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो A डैश B प्लस C डैश प्लस ए बी डैश. अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो इस वाले पार्ट पे मैं यहां पे अगर नोटिस करूं तो मुझे कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट नजर आ रहा है? असेंशियल वाला, राइट? तो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? ये वाला पार्ट मेरा बिल्कुल अलग है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज ए डैश बी एंड सी डैश. दिस इज ए डैश बी एंड सी डैश प्लस. सो दिस इज द प्राइम इम्प्लीकेंट फॉर दिस वन. Now for this, we will be having something common. What is common in this? A plus B complement plus C. और यहां पे C complement. अब ये C plus C complement को हम further 1 कह सकते हैं. That is, this is AB. तो हम डायरेक्ट क्या कह पा रहे हैं? This is my minimize function using a K-map. Next, another example. This is a function given to us. Now,
what we have done is we have represented in a 4 variable K map here. So the 0 terms, what we will do, this is 2 zeros, this is 2 zeros, now this is 2 zeros, and this is another combination. So what we will do is, we will simply calculate the essential prime implicants, that is B plus C and B dash, C dash and D. तो B plus C कौन से हुए होंगे? B plus C इससे और इससे आए होंगे, और B dash, C dash, D तुम्हारा कहाँ से आ रहे होंगे? इसके अंदर वाली चीजों से. And non essential prime implicants are this. We can simply simplify this. After simplifying this K map, we will get essential and non essential prime implicants, and simply perform the product of sum. We will get this as a solution or this as a solution, because this is appearing in an OR, right? So this is an example. Generally we get a question on SOP from a K map, that is sum of product from a K map, right? What is the don't care condition in a K map? So first we will deal with the definition of that. That is, don't care condition basically क्या है कि अगर मेरे पास वो 4 की पेयर या 8 की पेयर नहीं बन पा रही है, तो उसको 4 और 8 की पेयर बनानी है with some cross. Cross will have two values, either 0 and 1. We can take 0 and 1 depending upon the condition on there, right? So what we will do is, switching expressions are sometimes given as incomplete or with don't care conditions. Having don't care condition can simplify Boolean expression and hence simplify the circuit implementation. Along with 0 set and 1 set, we will have a DC don't care. Don't care condition in K map क्या है? Don't care will be expressed as cross or dash in a K map, right? Don't care can be bubbled along with ones or zeros depending upon what is more convenient in order to simplify the resulting Boolean expression. Simply सी बात है, अगर इसमें समझें, हम don't care को cross से represent कर रहे हैं, और उस क्रॉस का मतलब 0 and 1 होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन टू अस इन अ बूलियन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट और सिंप्लीफाई इट टू द लोएस्ट लेवल, राइट? लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन दिस. तो सिंपली फाइंड द एसओपी सिंप्लीफिकेशन फॉर द फॉलोइंग K map. This is a K map given to us. So what we will do is, this is 2 ones given to us, and there is 1 1 and there is 1 x. So, but obvious this x will be treated as a 1, na? In order to form pairs of ones. So, what we will do, this is 2 ones and this is 2 1, we can simply form a solution of this. So, we are having a 0 set here, 1 set as well as don't care. Don't care at what position is this? That is at position number 10, at position number 13, at position number 14. So, ये 10 वाली position जो है, this is treated as 1. Now, if we talk about this position, this is 1, this is cross. If we are making it 1, if it is 0, then it is 0. If it is 1, then with this will also don't care condition will also be 1, right? Up now, this one in comparison, this one and this one in comparison, तो ये मेरी दो की pairs बन गई हैं. अब ये मेरे पास यहाँ don't care condition है. अब ये don't care condition क्या काम कर रही होगी? या तो 0 या 1. 1 अगर मैं बात करूं 0 क्यों? 0 सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो ये वाली जो पेयर है मेरी 0 0 की फॉर्म हो रही होगी, राइट? तो सिंपल मैं यहां से क्या कह रहा हूं, जो मेरे एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स आए होंगे वो BD डैश आया है किससे? BD डैश आएगा इससे, और इससे आएगा मेरा BC डैश, B डैश C, और कोई भी मेरा नॉन एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा. दैट्स वाई मेरा ये रिजल्टेंट आया होगा यहां पे. एग्रीड? तो अगर इसको समझे हम यहां पे कि अगर देखो इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली को अगर मैंने 0 ले लिया तो कंसीडरेशन में आया ही नहीं. 1 ले रहा था तो कंसीडरेशन में चीजें आ रही थी, इसको 0 ले लिया तो मेरी कंसीडरेशन में नहीं है. तो बेसिकली मेरा फोकस किसकी तरफ चले गया? ये चले गया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट CD प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट. तो यहां से अगर मैं समझूं तो मुझे तो आंसर मिला ना कि A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आंसर मिलता है, राइट? और इसके अपोजिट अगर यहां पे समझूं तो यहां से मुझे क्या आंसर मिलेगा? A B कॉम्प्लीमेंट C D प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C D डैश. अब अगर यहां से देखूं तो मुझे यहां से आंसर क्या मिलता है? A B डैश C, और ये चीज ऐड होगी यहां पे A B डैश C.
अब इस बी डैश सी को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बी डैश सी आंसर कहां से आ रहा है, ये बी डैश सी जो मिल रहा है मुझे, ये इसका और इसका मिल रहा है प्राइम इंप्लीकेंट, इनके दोनों के प्राइम इंप्लीकेंट मेरे बी डैश ये आएगा। और सीधी सी बात है, नॉन एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स है, तो आगे मुझे इसमें कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा होगा। यही मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी यहां पे इसमें पीओएस के फॉर्म में कन्वर्जन है। वही चीज, ये 0 0 है, यहां पे 0 0, क्योंकि 0 0 होता है, राइट। अब ये वाली मेरे पास डोंट केयर कंडीशंस हैं क्रॉस क्रॉस, अगर मैं इनको 1 ले लूं तो मुझे कोई पेयर फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, 1 1 की यहां पे पेयर सिंपल हो गई। और इस डोंट केयर कंडीशन को 0 ले लूं तो मेरी 4 की पेयर बन गई। तो ये मेरी 4 की पेयर बनी, ये 4 की बन रही है, इसको मैंने 1 असाइन कर दिया, तो मेरा बीसी मिल गया मुझे कहां से, यहां से, और ये वाली पार्ट मुझे मिल गया इन दोनों से, और सिंपल नॉन एसेंशियल कुछ भी नहीं था, और ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। So this is the 2 examples on don't care conditions. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone. In this lecture I have discussed about what is K-map, 2 variable K-map, 3 variable K-map, 4 variable K-map, as well as K-map. From K-map we are discussing about SOP as well as POS, and also discussing about the don't care conditions. Thank you everyone.